here we will consider mass defect. Okay, so what is mass defect? The mass of a stable nucleus. If we consider about a stable nucleus, we can find that the mass of this nucleus is always less than the sum of the masses of the constituent nucleus. Okay, so जदि आम गोटे स्टेबल न्यूक्लियस कंसीडर करुचे, ओके, सो सपोज तार केते माने इट इज कंसिस्ट ऑफ z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, सो जदि आम गोटे स्टेबल न्यूक्लियस कंसीडर करुचे, सो तार मास जतिकी हेइथिबो, सपोज दिस इज मास इज x. ओके, सो mass defect कौन कहूँ? सो दिस मास इज ऑलवेज लेस देन the mass of the all the constituent elements. So z number of proton ro mass, okay, suppose zmp plus n number of neutron ro mass. Okay, so जदि आम ए दुईटा को मिसौचे, सो z जति नंबर ऑफ प्रोटॉन जति नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अच्छे, सो ताकर जदि मास आम जदि सम करुचे, सो इट विल बी हायर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस. Okay, so simply we can say the difference between the sum of the masses of the nucleons constituting a nucleus and rest mass of the nucleus is known as mass defect. So consider the nucleus of an atom represented by ZXA. So what is Z? This is the mass, this is the number of proton, and A is the atomic mass, and this is the chemical symbol of the nucleus of the atom. Okay, suppose there are how many number of neutrons? That is A minus Z number of neutrons. Okay, because we have the relation A equal to N plus Z. Okay, so number of neutron equal to A minus Z. So what is the mass of proton? Let's say mp. What is the mass of neutron? Let's say mn. So let's say the mass of the nucleus is capital M. So according to mass defect, so if we denote this mass defect by del m, so change in mass, okay, so that is equal to zmp plus a minus z into mn minus capital M. So mass defect का भीतर difference ना sum of the total sum mass of the constituents nucleus and the mass of the nucleus. So suppose there are z number of proton and mass of the proton is denoted by mp, and how many neutron? That is a minus z. So number of neutron into mass of the neutron. So this is the mass of the constituent nucleus and this is the mass of the nucleus. So the difference indicates the mass defect, that is del m. Okay, next come to binding energy. Okay, so if we will consider or if we will free the all the nucleons to combine to form a nucleus. Okay, so जदि आम न्यूक्लियस गुड़ा को फ्री करदेवा कौन करने ना गोटे न्यूक्लियस तैयारी करने. ओके, सो न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अच्छी, सो से गुड़ा कौन कौचे आम ताकू न्यूक्लियस बोली कौचे. सो जदि आम न्यूक्लियस गुड़ा को कंबाइन करी गोटे न्यूक्लियस कंसीडर करवा, सो ताले कौन हम ना देयर विल बी डिक्रीज इन मास. ओके, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, एंड दैट इज रिलीज्ड एज इक्विवेलेंट एनर्जी. सो जदि आम z नंबर ऑफ प्रोटॉन और सपोज a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंबाइन करी गोटे न्यूक्लियस तैयारी करूची, ओके, ताले कौन हम से माने आंकर जेतिकी मास थिबो, ओके, सो सेमानकर मास कौन हम ना डिक्रीज हम. ओके, सो कौन पाए डिक्रीज हम? सो इट इज रिलीज्ड एज एनर्जी. ओके, सो से को आकार रिलीज हो ना एनर्जी आकार रे रिलीज हम. और से एनर्जी रा काम कौन ना दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट is used in binding the nucleons inside the nucleus, that is called binding energy. Okay, so binding energy रा concept कौन ना जति जेतिकी amount रो nucleons, okay, so combine ही nucleus माने गोटे तैयारी करूछंती बा फॉर्मेशन करूछंती, ताले जेतिकी अमाउंट रो मास डिक्रीज होउची, सेही मास जो डिक्रीज हेची जेतिकी अमाउंट रो मास, सो सेटा को आकार रिलीज होउची ना एनर्जी आकार रिलीज होउची. और सेही एनर्जी कोठी यूटिलाइज होउची ना जो न्यूक्लियस गुड़ा को बाइंड हे रहउछंती, सो सेमान को बाइंड करी रखिबारे से एनर्जीटा यूटिलाइज होउची, जोटा को हम कहउचे बाइंडिंग एनर्जी. तो एनर्जी यूटिलाइज्ड टू बाइंड ऑल द nucleons inside the nucleus is called binding energy.
mass defect और binding energy भितर कौन relation रही ना binding energy equal to del m into c square. Del m is the mass defect and c is the velocity of the light in vacuum. Okay, so if we will take del m in kg and c in meter per second, then we have to take the binding energy in joules. Okay, if del m is taken in mu atomic mass unit, then binding energy will be del m into 931.5 in terms of mega electron volt, that is MeV. Okay, so the binding energy of the nucleus with mass number A and atomic number Z is given by this relation. Okay, so this is the relation of binding energy. This is relation between binding energy and what, the mass defect. Okay, so एटी हम कौन जाने बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर. सो डेल एम पे आगुरा हम एक्सप्रेशन जानते, सो से एक्सप्रेशन के पुट कर देले केता आसीबो. So binding energy equal to ZMP plus A minus ZMN minus capital M into C square. So this is all about the expression for binding energy. Okay.